Okay, so guys, today we are going to learn a very important topic, that is modal verb. Okay, this is one of the modal verb and very important. Okay, okay, like in English we have can, will, okay, may, might. So in German we have also modal verbs. Okay, structure is same for all the modal verbs. For now, we are learning one modal verb, that is Houston. Okay, Sir, Houston. which book page number? Yes, Sylvia, what are you saying? Sir, which book and page number? Okay, like this is This not is in not the book. This is in the book, but this is my self notes. After the class, I will send it to you. Don't worry. Please don't write. Look at the screen. Don't write anything. Okay. So, what is Houston? Houston means would like to, and is used to express polite desires or wishes. Okay, like in English we say I would like to do this, I would like to do that. Okay, like when we express our wishes or desire, we use Houston. It is conjugated subject form of Mugan. Okay, so if we see the conjugation part, conjugation, you can leave this point for now. Okay, conjugation swai is another grammatical topic of A2. Okay, okay. Now, if you see the conjugation, so ish, musta, do, mustis, as he as, musta, wear, mustan, ear, musted, zz, mustan. Is this clear, everyone? yes, sir. Sylvia, Steven? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, if we see the structure, sentence structure, Meusta is a modal verb, okay, as I told you before also. So it is followed by the infinitive verb. This is important. Infinitive verb. It means जो हमारी मेन वर्ब होती है उसे हमें कॉन्जुकेट करने की नीड नहीं होती, बिकॉज वी ओनली कॉन्जुकेट वन थिंग. इफ देर इज अ मोडाल वर्ब इन द सेंटेंस, सो वी कॉन्जुकेट मोडाल वर्ब. अगर मोडाल वर्ब नहीं होती सेंटेंस के अंदर, देन वी कॉन्जुगेट मेन वर्ब. ओके, सो इट इज फॉलोड बाय एन इंफिनिटिव वर्ब एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. दिस इज इम्पोर्टेंट अगेन. ओके, इट मीन्स, ओके, जब हम मोडाल्स वर्ब यूज करते हैं, एक तो होती है आपकी मोडाल वर्ब, ओके, Yes. एंड एक होती है आपकी मेन वर्ब. ओके, अगर सेंटेंस के अंदर मोडाल वर्ब है, सो दिस टेक्स योर सेकंड पोजीशन. ओके, जो अभी तक पोजीशन आपका मेन वर्ब ले रही थी, नाउ मोडाल वर्ब विल टेक योर सेकंड पोजीशन. ओके, एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मेन वर्ब? मेन वर्ब गोज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. This is simple, not hard to understand. Okay, if there is a modal verb, so we conjugate modal verb, conjugated. Okay, we conjugate it. So I'm writing here conjugate. Okay, and you can see the conjugation here. Okay, and you will not conjugate main verb, but you will write infinitive form. Infinitive form means without conjugation. When we don't conjugate, so it's a infinitive form. Is this clear, everyone?
Yeah. Any doubt? No, sir. Bharat, any doubt? Second position. No, sir. You can the example से बता दीजिए कोई example दे. हाँ हाँ, अभी अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे, बढ़िया, अभी तो हम रूल्स पढ़ रहे हैं. तो वेट अ सेकेंड. Okay, now come to the structure. Okay, so subject first is your subject, then Mustan. Okay, you will conjugate it. You will conjugate. Okay, and then object, if any. If there is any object, you will write object, and then other element if there is any element, and then at the last main verb. Okay, और वो भी किस में, infinitive में, without conjugation. Clear? Okay, sir. Example: Ich möchte einen Apfel. Okay, so ich is your subject. Am I clear? Subject. Yes. Möchte is your modal verb. Verb. And according to ish, we are conjugating mustan. So you can see musta. Musta. So that's why ish musta. Then einen Apfel, object. Okay. And then verb. What is the verb? Main verb. Sir. Okay. Okay. और आप इसे किस में लिखोगे? Infinitive. Without conjugate. Okay. इसलिए जैसे एप्पल है. Okay. Yes, Bharat. What Bharat? Apple. Yes, your I voice don't is know. breaking. Okay. Okay, guys, let me know what is the article of Apple. A male, this masculine. Masculine. Okay, masculine. एंड यहाँ पर आपका जाइन फॉर्म नहीं है, हाइजन नहीं है, जाइन वर्ब नहीं है, हाइजन नहीं है, एंड वेरदन नहीं है. इट मीन्स आप कौन सी टेबल यूज करोगे? Accusative. आकुजाटिव. वेरी गुड. ओके, अब आकुजाटिव मैस्कुलिन देखिए क्या होता है आर्टिकल. वी पुट en आई, राइट भरत? सो दैट्स व्हाई आइनन, बिकॉज यहाँ पर जो बात हो रही है वन एप्पल की बात हो रही है, वन. ओके, और उनबेस्टिम्टर जो होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, सिंगल चीज के लिए जो बताता है. Sir, just बड़ी आपकी ना वॉइस कट रही है, ब्रेक हो रही है. modal verb है. योर वॉइस इज ब्रेकिंग. Accusative यूज होएगा. यस, जितनी भी मोडाल वर्ब है उसमें आपका आकुजाटिव केस यूज होगा, क्योंकि इसमें जाइन तो फॉर्म आती नहीं है ना आपके. Okay, sir. क्लियर? all modal verbs, sir? या 99% आप देखोगे आप आकुजाटिव टेबल यूज करोगे. जिल्विया, स्टीवन, जिडॉन, भरत, क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Zilvia, clear? Yes, sir. Okay. Now we see more example. Okay. So, ish. Okay. Zidon, please read and tell the meaning. Ich möchte einen Kaffee trinken.
meaning I want to drink coffee. yeah, I would like to drink a coffee. Okay, Coffee. so again ये आपका masculine gender है. Okay, and accusative table. So Ainan. Yes, sir. Sylvia, next one. Do mock test in Kino Gehan. Meaning Do mock in Kino Gehan. meaning Uh, would you like to go to movie theater? is this question? No, no, sir. No. So Do mock test in you Kino. like your voice is not audible. I am not able to understand. I told you to use the earphone. Yeah, please tell again. Do is you. Mock test You is okay. you. So how you can translate you? Yeah. You would like. You would like to go to cinema. Okay, you would like to go to cinema. Clear? Yes, sir. Yes, Is sir. Steven clear? Yes, sir. Yes. Okay, next one. Steven, you read please. Er mochte ein Naus Otto kaufen. Er möchte ein neues Auto kaufen. Meaning, He would We would like to like, new car, buy new car. yeah, very good. Okay, yeah, Bharat. Next one. yes, sir. Wir möchten Deutsch lernen. Yeah, Uh, we would like to learn Germany. very good. German. German. Zidane. Yes, sir. Next one. Fifth. C motion Fifth one. Hilton. Oh, ihr Mostet ein Pizza bestellen. Zilvia, please mute when Zidane speaks. Yeah, Zidane. Tell the meaning. Sir, 1 minute. Sorry. What? I think sir got it. Meaning? Would you like to order a pizza? Would you like this question? No. फिर you all would like to order a pizza. Clear? Yes, sir. Sylvia, next one. Sie möchten weiter nicht arbeiten. Yeah. Sie is you Yeah. like Yeah. heute is today. Yeah. Very good. Nicht is not. Arbeiten is Yeah. work. Yeah. Meaning? You like to work today. So Yeah. you don't like. You would not like to work today. Clear, everyone? Yes. So guys, you need to main focus on the position of main verb and modal verb. So you can see here modal verb, second position in all the sentence, and main verb At the end. at the end. Okay, and rest other content in the between. Is this clear, everyone? Yes, sir.
Yes, sir. Okay. Yes. Now, okay. So as I told you कि जो सब्जेक्ट की मेन वर्ब की पोजीशन होता है कौन लेता है वो मोडाल वर्ब. Okay. Similarly, if you see this Yana infraga, याना infraga में अगर हम मोडाल वर्ब यूज नहीं करते तो स्ट्रक्चर क्या होता है भरत? Yes, sir. स्ट्रक्चर ऑफ याना infraga. Yeah. That's my question. And Yes, please tell. Don't you learn? भूल गए. Okay, very good. Four times you will write the structure. Okay. याना infraga. ओके अभी पन्ने नहीं पलटने बाद में देखना है आपको. अभी मैं बता देता हूँ. ओके सिंपल सेंटेंसेस and W questions. If you don't know the structure, okay, you will ask in the group. Yes, sir. Okay, 4 times. I will check it. Okay, sir. Yeah, Zidon, you tell please. Structure of Yana infraga. Of simple जो हमारे जिसमें मोडाल वर्ब यूज नहीं करते. Zidon. Sir, I don't know. Okay, you will again. You will also write. Okay, sir. Okay, Steven, you tell please. Steven, Yes, sir. Yana infraga structure. Yes, no question structure. Yes, no question. It's like no, sir. Don't know. I'm Okay. confused. Steven, you will write also 4 times. Yes, Dilvia, you tell. Sir, yes, no question. The verb will come first, Yeah, very good. Verb. then subject, and then object. Then subject, Yeah, object, very good. Okay, once you write 4 times, you will not forget. Okay, verb, subject, and object. Okay, so guys, इसमें क्या करेंगे? वर्ब तो जाएगी एंड में, ठीक है, और वर्ब की पोजीशन क्या लेगा? मोडाल वर्ब. सो स्ट्रक्चर क्या होगा अगर हम इसे फॉलो करते हैं? स्टीवन टेल. या स्टीवन यू टेल. मोडाल वर्ब की पोजीशन. या प्लीज टेल. Then that verb will come first, then the modal, and then the object. Wrong. I am repeating again. Okay. Sub- Modal verb will take the position of verb. Modal verb will take the position of verb. And verb goes at the end of the sentence. So what will be the structure? Nouns, modal verb, Yeah. and subject, and then Yeah. verb. Modal verb. Very good. Modal verb plus subject plus object. जो भी कोई object होगा. Then main verb. Right? Yes, sir. Yes, sir. And you will also write this structure also and modal verb structure also जो simple वाले sentences होते हैं. भरत, स्टीवन, जिडॉन and Zilvia, you also modal verb के structures. Okay, 3 times. Subject plus Yes. modal verb. भरत, come on camera. So, Main verb. And guys, जो मैंने अभी ये वाला स्ट्रक्चर लिखा है इसमें हम कॉन्जुगेट क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब. या व्हाट वी विल कॉन्जुगेट What, sir? इन ये वाले स्ट्रक्चर में जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, इसमें कॉन्जुगेट क्या करेंगे हम?
modal verb. या modal verb. कॉन्जुगेट करेंगे हम मोडाल वर्ब, और मेन वर्ब कैसे आएगी आपकी? Infinitive. इन्फिनेटिव। ओके, सो गाइज यहीं पर ये जो अभी हमने यहाँ पर देखा है स्ट्रक्चर यानाइन फ्रागा का, ये कौन सा स्ट्रक्चर है आपका? यानाइन फ्रागा, यानाइन। ओके, सो मोडाल वर्ब अगर है, सो मोडाल वर्ब को हम कॉन्जुगेट करेंगे। मोडाल वर्ब कम्स फर्स्ट, ओके, म्यूस्टेस, देन योर सब्जेक्ट, then mid mere common. You can see main verb at the end. Okay, and this is your first position if there is a modal verb. So what will be the meaning? Mustes do mid mere common. What do you like? With mid is with, mere is me. With Would you like to come with me? Clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay, very good. So ये तो हो गया आपका यानाइन फ्रागा का स्ट्रक्चर। ओके, अगर इसमें हम डब्ल्यू क्वेश्चंस ऐड कर देते हैं, सो आपका वो देन व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? Verb position comes second for the W questions. ओके, या ओके, यस स्टीवन यू टेल, डब्ल्यू क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर क्या होता है जो हमने विदाउट मोडल वर्ब्स जो हमने पहले सीखा था? It's a verb, subject, and then object. से अगेन? Verb, subject, and then object. रॉन्ग। ओके, भरत यू टेल, yes, sir. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यू क्वेश्चंस? डब्ल्यू क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपके वाई, व्हेन, व्हाट से स्टार्ट होते हैं। Object plus subject. से अगेन? Object. ऑब्जेक्ट पहले आएगा। नहीं sorry. ये जो सब्जेक्ट डब्ल्यू क्वेश्चन में सब्जेक्ट पहले आएगा सब्जेक्ट में आता जिसमें हम W क्वेश्चंस word. पूछते हैं। या सिल्विया यू टेल। So first the question word will come, या W word. फर्स्ट then the फर्स्ट verb, डब्ल्यू क्वेश्चंस। then the verb, then subject, and then object, डब्ल्यू and then क्वेश्चंस के बाद देन आपका जो ये यानाइन फ्रागा वाला Verb. स्ट्रक्चर सेम वही फॉलो होगा। Verb. इसके बाद जो यानाइन वाला स्ट्रक्चर है, डब्ल्यू क्वेश्चंस प्लस yes, no. वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इज दिस क्लियर? डब्ल्यू क्वेश्चंस प्लस वर्ब Yes, sir. प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसमें हम मोडाल वर्ब ऐड कर देते हैं तो क्या स्ट्रक्चर होगा? डब्ल्यू क्वेश्चंस, देन मोडाल वर्ब, then subject, then object, and then your main verb. Just guys, always आप देखोगे मेन वर्ब हम एंड में यूज कर रहे हैं अगर हम मोडाल वर्ब यूज कर रहे हैं। ओके, सिंपल एज दैट। एंड अगर मोडाल वर्ब यूज हो रहा है, मोडाल वर्ब है सेंटेंस के अंदर, सो उसे हम ऑलवेज सेकंड पोजीशन पर यूज करेंगे। सेकंड पोजीशन, ओके, ये आपका यानाइन फ्रागा में फर्स्ट पोजीशन, और जो आपका ये वाला होता है आउजागाजा सिंपल में सेकंड पोजीशन। क्लियर? ओके, यस भरत, प्लीज रीड एंड टेल द ट्रांसलेट दिस। Sie möchte ein Kleid tragen. या
Uh, we you you Yeah. you would like to wear a like like dress. You would Yeah. like to wear a dress. Okay, Steven, last one. Wir, wir mussten das Buch lesen. Book. Book. Yeah, meaning. We would like to It means you are not learning vocabulary. I have told the meaning of book and lesson many times. It means you are not learning vocabulary. Okay. So today is your Monday. Okay. On Friday, on not Friday, on Tuesday, tomorrow. Okay. I was about to take your test on Friday, but I think absent. So I will on Monday. So on Tuesday, tomorrow, I will take your test, third chapter. Right? Do you remember, guys? yes. Yes, sir. Okay, sir. Sylvia, do you remember I told you to take your Yes, sir. test? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, guys, this is the exercise. You need to do this as a homework. Okay. So, please do. First one. इश आपको क्या करना है? कॉन्जुगेट करना है म्यूस्टन करेक्टली एंड इन्फिनिटिव वर्ब यूज करना है. So, what will be the answer of first one? Ich möchte Ein ich ein Ein, ice, then I would like to Asan meaning. Then food. What? Food. would Here meaning is to eat. to eat. to eat. What to eat? 120 rupees on Google Pay for business. That's What is ice? Ice is ice cream. ये दूसरा है. I would like to eat ice cream. So ich möchte ein Eis essen. Okay. We conjugate müssen जो हमने कर दिया यहाँ पर and essen infinitive form. Is this clear? Yes. Yes. Everyone? Yes, sir. Yes. Okay. So guys, total there are 20 sentences, 10 and 10. Okay. So आपको क्या करना है? ये conjugate करना है. And you will also make the question. How can you make the question? Ich möchte ein Eis essen. Okay. So how can you make the question? Möchte ich ein Eis essen? Would I like to eat ice cream? Would I like to eat ice cream? And here question mark. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. So 20 these sentences. This is simple, will not take too much time. You just need to fill here conjugation part and the same verb here. And you just in this sentence you will just put modal verb at the first position. Simple. Clear? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, this is your homework. If you complete your homework, so you will understand it better, otherwise no.